वेलकम बैक टू एसके Monikis and we're back again with another video of mine and आज हम लोग about quantum web mechanics की एक summary लेंगे. Since we have already dealt enough with web mechanics as of quantum mechanics, so this is not the classical web mechanics जहाँ पे हम लोग सिर्फ waves की property discuss करते हैं, like sound waves you have for instance, and you have other kind of waves that are propagating through a medium or maybe an EM wave itself like light propagating through vacuum. Rather हम लोग wave mechanics, when I say I actually mean Schrodinger's version of quantum mechanics, जहाँ पे हम लोग particles को as waves treat करते हैं and then in that case you solve the Schrodinger equation for the wave function of the particle which of course treats them as waves, and then you can of course calculate your various expectation values of observables, and यहाँ पे जो भी उनकी उन kind के wave packets की या फिर उन काइंड के मैटर वेव्स की हम लोग प्रॉपर्टीज यहाँ से डिराइव कर सकते हैं. वी ट्राई टू डिराइव देम. नाउ द थिंग इज दिस इज द रीजन इट्स कॉल्ड क्वांटम, दिस इज द रीजन इट्स कॉल्ड वेव मैकेनिक्स इन द फर्स्ट प्लेस. सो लेट्स टेक अ ब्रीफ समरी ऑफ इट इन दिस वीडियो. व्हाट इट सेज इज, पहली चीज आपको समझना है कि श्रोडिंगर ने बेसिकली क्या किया था. ही गेव अस एन इक्वेशन एंड यहाँ पे श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया विच टुडे वी कॉल श्रोडिंगर्स इक्वेशन और श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, एंड ही टोल्ड अस कि माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई ओवर टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस v टाइम्स साई इक्वल्स आयोटा एच बार द फर्स्ट time derivative of psi. This is the equation that Schrodinger gave us. Why did he give us this equation in the first place? Well, what he told us was this, कि जब Schrodinger study कर रहे थे about various kind of, you see, about the spectrum of the light emitted from the hydrogen atom, maybe you consider, and these kind of various quantum phenomena that had been discovering at that time during the 1920s. तब वहां पे श्रोडिंगर को मिला कि अगर वो इसी चीज को मे बी इन पार्टिकल्स को एज वेव्स ट्रीट करते हैं, विच वाज एक्चुअली डी ब्रॉगलीज आइडिया. ही टोल्ड अस कि एनी सर्टेन पार्टिकल दैट हैज मोमेंटम, आप इसके साथ एक वेवलेंथ असाइन कर सकते हो. दैट इज व्हाट डी ब्रॉगली टोल्ड अस, एंड ही गेव अस डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट फॉर अ मोमेंटम p, let us write it as of lambda. You can always write h over p as the wavelength of this particle, जिसे as a matter wave treat किया जा सकता है. So you have a particle here, मेरे पास एक particle है and let's say it moves with a momentum p. Then what de Broglie told us कि मैं इसके साथ एक wave assign कर सकता हूँ, and what I say कि इसकी जो wavelength होने वाली है it is going to be something like this wavelength that you see right here, lambda. This I can write as the Planck's constant which was introduced by Max Planck in the 1900s, जहां से डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एक्चुअली द ओल्ड क्वांटम थ्योरी स्टार्ट हुई थी, डिवाइडेड बाय p. सो व्हाट श्रोडिंगर डिड वाज कि उन्होंने सोचा कि ये पार्टिकल्स एक्चुअल में वेव्स ही हैं या फिर एक्चुअली वेव्स की प्रॉपर्टीज रखते हैं, एंड सिंस दे आर कैरिंग ऑन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, तो यहाँ पे इनका एक वेव इक्वेशन भी होना चाहिए. सिंस यू नो whenever there is a wave there is a wave equation. Now what can be one basic wave equation we have studied in classical mechanics? Well, you might call it that one very basic wave equation that you have studied in classical mechanics would be this. Right? तो यहाँ पे मैं इसे actual में V से represent कर देता हूँ. Now this is the wave equation that you studied in classical mechanics, in the classical wave mechanics. And what this tells you that the second x derivative of this function right here is equal to 1 over v square times the second dying derivative of the very same function. What does this mean? Well, what this means is कि मान लो आपके पास एक kind का wave है, maybe a transverse wave that propagates on a string for instance. Then you know that right here यहाँ पे इस string के particles up and down oscillate करते हैं. So it oscillates up and down, right? नाउ किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द वेव, क्योंकि वेव तो यहाँ पे प्रोपगेट करी है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन दिस केस अप एंड डाउन प्रोपगेट करते हैं, व्हिच इज द केस ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव. सो दिस displacement of the particles of medium themselves I write using this function,
That is my displacement function. And now what we can find on this string using mathematics, using differential equations, या फिर इसे based on the string itself using f equals ma and stuff भी solve किया जा सकता है. And you'll find that the second x derivative, x considered as what, मान लो यहाँ पे आपके पास x equals आपने 0 रख लिया, यहाँ पे हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है, so it propagates towards more and more positive values of x equals 0 यहाँ पे भी रख सकते हो. So this horizontal line that you see serves as the reference line for our coordinate system for the x-axis. Now यहाँ पे ये जो displacement हो रहा है, I refer to this as the displacement of the particles of the string in this case, or in general medium. Its second derivative with x is equal to what? Is equal to a certain number 1 over v square times the second derivative of the very same function with respect to time. अब ये चीज क्या है, हमें पता चलता है कि ये चीज तो एक्चुअल में स्पीड ऑफ द वेव के इक्वल होती है. This thing is equal to speed of the wave. So for every wave that you have, you can always write a wave equation for it. इसी चीज को प्रेशर एम्पलीट्यूड्स के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है. In which case you have the case of sound waves. So that is you see sound waves को आप कैसे propagate करते हो? It is propagated through compressions and rarefactions in region. कि एक region में density आपकी high हो जाती है of air, and जैसे वो density high होती है वो propagate करती है. एक region में low होती है, high होती है, low होती है, and ये पूरा propagate करता है. So that is pressure differences and density differences create होते हैं. And you can replace this by pressure density difference. Pressure difference to be more specific, and you have the case of a sound wave. तो वैसे श्रोडिंगर ने अपन डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स की मैटर को आप एज वेव्स रिप्रेजेंट कर सकते हो. उन्होंने ये एक वेव इक्वेशन लिखा which correctly explained all the quantum phenomena that had been discovering at that time around 1920s. This is the equation, the wave equation Schrodinger gave us for matter waves. तो यहाँ पे हमें हमारी एक ड्यूटी होती है मैटर वेव्स को अच्छे से समझने के लिए. what exactly are matter waves? And these are not actually plane waves in the sense that you consider waves to be. So what do you mean by waves? Well, waves you consider कि कुछ disturbances होते जो कि एक मीडियम से एक किसी भी मीडियम में propagate कर सकते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जा सकते हैं. Like for instance, you have light, an electromagnetic wave, and it goes from air to water or maybe to glass or whatever. It changes medium, and हमें पता है कि उससे कुछ और फेनोमेना अराइज होते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हो गया. सो देयर आर दीज काइंड ऑफ फेनोमेना दैट आर एसोसिएटेड विद चेंजेस इन मीडियम. द थिंग इज कि मैटर वेव्स आर नॉट जस्ट लाइक दोज वेव्स. इसके साथ कुछ ऐसा हमारा कंसेप्ट है कि दीज आर नॉट रियल वेव्स. मतलब मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, हम लोगों ने क्या लिया कि एक बॉक्स लिया, कंप्लीटली आइसोलेटेड बॉक्स. तो when I have this completely isolated box, what I consider is this कि इसमें अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया and I close the box. So what happens कि श्रोडिंगर के इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन का this function that you see right here psi, जिसे वेव फंक्शन कहते हैं, according to whatever potential energy values and constraints there are to this box. जैसे यहाँ पे इस particular situation को particle in a box situation कहते हैं, which is one example of infinite square wave which I have already introduced in my previous videos. Now the thing is कि इसके according हमारे particle का wave function decide होता है. So you solve this equation for particular potential values and you find the wave function of the particle that you find here. Now the thing is कि ये जो wave function होता है इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल, सिंस यू सी पार्टिकल्स के पास प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन आप मान लो समथिंग लाइक दिस कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के साथ मैं एक काइंड की वेवलेंथ एसोसिएट कर सकता हूँ. बट द प्रॉब्लम दैट अराइजेस हियर, जब मैं इस वेव फंक्शन को सॉल्व करता हूँ, मैंने सॉल्व दिस वेव फंक्शन आई गेट वॉट एवर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी. तो another thing that comes along the way is Born's statistical interpretation. And Born ने हमें कुछ ऐसा बताया that when you have 2 points A and B
तब उन दोनों के बीच में अगर मुझे एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द पार्टिकल इज हाउ लाइकली टू बी फाउंड बिटवीन ए एंड बी, सो आई फाउंड इट by integrating between a and b mod of psi square dx. दिस इज बॉर्न्स स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कि दो पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच हाउ लाइकली इज द पार्टिकल फाउंड टू बी देयर, so I want to find the probability, so I integrate this term. Now the thing is that is basically happening here. ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर इंट्रोड्यूस कर सकती है कि यू कैन नॉट एवर एग्जैक्टली फाइंड वेयर द पार्टिकल इज गोइंग टू बी, एंड दिस इज वन ऑफ द यू सी पेक्युलैरिटीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इटसेल्फ, क्योंकि previously we were concerned with, physics was concerned with that how do you find where a particle is going to be or how fast it is going to move in the future, or maybe how fast it was moving in the past, or where it was in the past. So that was basically why physics was studied in the first place. लेकिन अब with the introduction of quantum mechanics in 1920s, in the late 1920s at its full development, हमें पता चला something like this कि आप कभी भी किसी भी पार्टिकल के लिए कंप्लीटली उसके जो भी ऑब्जर्वेबल्स हैं, मतलब क्वांटिटीज जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक पोजीशन एंड मोमेंटम एंड एनर्जी एज वेल, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज बाय प्योर प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना. यू कैन ओनली गिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग दिस वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल, और मे बी दैट वैल्यू और मे बी दैट वैल्यू. This is the thing that introduces this statistical nature, probabilistic nature for particles in quantum mechanics. तब अगर मैंने इस वेव इक्वेशन को सॉल्व कर दिया and I get some wave function, तो इसके हिसाब से I can find what are the probabilities of finding this electron at various places in this box. कि जब मैं ये बॉक्स फिर से खोलूंगा, what I'll find is कि this electron might not be here, it might be here. Okay, I close the box again. And when I close the box again and कुछ time बाद, the thing is कुछ time बाद, and it is a very important concept, क्योंकि अगर मैं instantly मैंने ये box खोला, that is a really high, in fact even not a really high, but there is a probability of 1 that I'll find the particle in the same position again. But after some time मैं इस box को जब फिर से खोलूंगा, the particle might be here. So you see there is probabilistic nature in positions and momenta of the particle. Similarly, you can find the probability for having this particular value of momentum and that value of momentum by studying the wave equation more. So this is the wave function. Now what the deal with matter waves is something like this कि जब मैंने इस बॉक्स को क्लोज कर दिया एंड इस पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में एज अ मैटर वेव बिहेव करता है. सो व्हेन नो ऑब्जर्वेशंस आर गेटिंग मेड, आर बीइंग मेड, ये एज अ मैटर वेव बिहेव करता है इन द सेंस कि अगर मैंने आपसे पूछा कि इस वेव की लोकेशन क्या है, सो यू क्लियरली कांट टेल व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस वेव फॉर द रीजन कि ये वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक पूरे रीजन को स्पैन करती है. देयर इज नो पर्टिकुलर लोकेशन. सो वेरी सिमिलरली यू कैन एसोसिएट मैटर वेव्स विद द इलेक्ट्रॉन की मान लो फॉर इंस्टेंस ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन वेव को मैंने एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया. सो मैंने क्लोज द बॉक्स, ये इलेक्ट्रॉन वेव एज दिस काइंड ऑफ वेव बिहेव करता है. जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन वेव हो गया, एंड व्हेन आई ओपन द बॉक्स, इस पूरे वेव में ये जितने भी पॉइंट्स हैं, किसी एक पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाते, ये पूरा वेव कोलैप्स कर जाता है. व्हेन यू से वेव फंक्शन कोलैप्स करता है, व्हाट इज द वेव फंक्शन? वेल, इट इज बेसिकली द फंक्शन दैट गवर्न्स द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो व्हेन वी से वेव फंक्शन कोलैप्स करता है, मतलब ये पार्टिकल एक पोजीशन एस्यूम कर लेता है. What we say is कि जैसे ये पूरा मैटर वेव स्प्रेड आउट था, तो जिस रीजन में ये पूरा मैटर वेव स्प्रेड आउट था, उस प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहां पे कह सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेव, अलोंग दिस एंटायर वेव इटसेल्फ, ये एज अ पार्टिकल अपना स्टेट एस्यूम कर लेता है. एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय मैटर वेव्स. The very important thing is कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कुछ ऐसा करता नहीं है कि एज अ वेव स्प्रेड आउट हो गया. नो, इट इज नॉट बीइंग स्प्रेड आउट एज अ वेव. इट इज ओनली अ मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेइंग द वेरी सेम थिंग. इसलिए मोर देन मैटर वेव्स, दो हम लोग ऑल्दो इससे हम मैटर वेव्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड डी ब्रॉगली गेव अस
कि what the wavelength will be, but this is again only an abstract wavelength again. So what we are dealing with is abstract ideas. यहाँ पे particle waves जैसी कोई real चीज होती नहीं है. There is nothing real like matter waves. Rather इसी चीज को एक different तरीके से हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं as probability waves. You might want to call it probability waves. So what it is कि मैंने यहाँ पे एक पूरा probability distribution curve plot कर दिया along the length of this entire box, and वहां पे उसके हिसाब से ऐसे मान लो एक वो probability distribution curve ऐसा ही है, उसके हिसाब से जहां पे ये हाई है, जहां पे ज्यादा पीक पे होगा, well maybe at this point, so you are more likely to find the electron here than at this point maybe. So that is a probability wave. That is a much better representation of it, for there won't be so much confusion, क्योंकि matter waves जैसी कोई real चीज होती नहीं है. It is only an abstract way of telling the very same story. So ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन के अगेन आइडिया पे आ जाए. So you can calculate its wave function, and when you close the box, इसका wave function according to श्रोडिंगर इक्वेशन expand कर जाता है एंड अपना फॉर्म एस्यूम कर लेता है. अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन प्रोबेबिलिटीज एस्यूम हो जाती है. अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर दिस रिस्पेक्टिव काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज. नाउ द थिंग इज कि मान लो मैंने यहाँ पे इससे कुछ ऐसे अलोंग एक्स mod of psi square प्लॉट किया, which is basically what we are concerned with, the square of the absolute value of wave function, and maybe यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा एक ग्राफ बना है. ऑलराइट, तो जैसे मैंने बॉक्स को क्लोज किया, ये मेरे एक ऐसा ग्राफ बन गया. इसके हिसाब से पूरी वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग स्पेस. एंड वेयर एज सून एज आई वेव दिस पर्टिकुलर थिंग, जब मैंने बॉक्स को फिर से खोला एंड आई फाउंड द पार्टिकल एट वन पर्टिकुलर पोजिशन, देन आई फाइंड दिस कि मेरा ये जो वेव फंक्शन था कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था. नो आई एम वेरी लाइकली कि ये पार्टिकल मुझे यहाँ पे मिलेगा. सो लेट्स से कि ये पार्टिकल मुझे यहीं पे मिला. तो अगर ये पार्टिकल को मैंने ऑब्जर्व कर लिया एंड मुझे यहाँ पे मिलता है, सो इज द वेव फंक्शन स्टिल डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस विद द सेम वे? वेल नो, इट इज नॉट. व्हाई इजंट इट? इस रीजन से क्योंकि अब मुझे पता चल गया ये पार्टिकल वहीं पे है. तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मुझे पता चला कि ये वेव फंक्शन इस पॉइंट पे पीक पे है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस पार्टिकल एट दिस वन पोजिशन is equal to 1. That is the probability of finding it. The probability between A to B is given by this. मतलब the probability at a particular position x is equal to what? Well, it is equal to mod of psi square. In fact, to be more precise, it is the probability of finding the particle between x and dx. But since dx is infinitesimally mathematically, तो probability of finding it at x is equal to mod psi square. जब मैंने देख लिया कि ये यहीं पे आई सी द प्रोबेबिलिटी इज 1 नाउ, पहले ये कुछ और थी, अब ये 1 है. सो मुझे पता चला ये वेव फंक्शन सडनली एक पीक वैल्यू पे आ जाता है, जीरो हो जाता है एट ऑल द अदर प्लेसेस. लेट्स कॉल दिस पॉइंट स्मॉल a. सो इन दिस केस दिस इज व्हाट आई कॉल द कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन. कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन. अब यहाँ ये डिसाइड कैसे होता है कि इस पार्टिकल कि वेव फंक्शन को कोलैप्स करने, तो पार्टिकल कौन सा पोजीशन एस्यूम करेगा. एंड द थिंग इज अगेन प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ पार्टिकल इंटर्स द चार्ट, एंड यू कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट ये पार्टिकल कहाँ पे लैंड करेगा या फिर कहाँ पे पाया जाएगा, और इसकी मोमेंटम की क्या वैल्यूज पाई जा सकती हैं. ऑल यू कैन से इज वेल दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे होगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा, एंड यू कैन से नो मोर एक्यूरेटली देन दैट. एंड यहाँ पे इसकी वजह से एक काइंड का पैराडॉक्स बन जाता है, विच इज कॉल्ड द मेजरमेंट पैराडॉक्स. एंड व्हाट इट इज कि वेव फंक्शन कोलैप्स कैसे हुआ अपन मेजरमेंट. हाउ डज द वेव फंक्शन कोलैप्स? वेल दैट्स अ क्वेश्चन. एंड जब वेव फंक्शन कोलैप्स करता है एंड ये हमारी पूरी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन कि ये पार्टिकल के पास एक ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे इसे पता चलता है कि इस मेजरमेंट पे, या फिर जिससे ये डिसाइड करता है कि इस मेजरमेंट पे मुझे इस पोजीशन को एस्यूम करना है, क्योंकि अदरवाइज तो ये पार्टिकल एज अ मैटर वेव डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस, या फिर एज अ प्रोबेबिलिटी वेव डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ मोर जनरल सेंस. सो द थिंग इज द पैराडॉक्स हैजंट बीन सॉल्व्ड येट, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव
इंटरप्रिटेशन जरूर प्रपोज किए गए हैं, लाइक द एवरेट इंटरप्रिटेशन विच इज द मेनी वर्ल्स इंटरप्रिटेशन विच सेज कि व्हेन यू ओपन द बॉक्स एंड यहाँ पे एक पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आपके पास जो कि प्रोबेबिलिटीज बताती है हाउ लाइकली द पार्टिकल इज टू बी फाउंड दैट। तो वहां पे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पोजीशन हैं वो सारे वैल्यूज ऑफ पोजीशन एस्यूम होते हैं अलग अलग वर्ल्ड्स में या फिर अलग अलग यूनिवर्सेस में। दिस व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड द मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, MWI स्लैश एवरेट इंटरप्रिटेशन। तो हमारी एक दुनिया है, हमारा एक यूनिवर्स है जहां पे ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोजीशन इस पार्टिकल ने अस्यूम किया, इन सम अदर यूनिवर्स ये वाली पोजीशन अस्यूम हुई, इन सम अदर यूनिवर्स ये वाली पोजीशन अस्यूम हुई, एंड दैट इज हाउ यू आर डूइंग दिस एंटायर थिंग। तो यहाँ पे मेजरमेंट पैराडॉक्स नहीं आते, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग कभी भी प्रिसाइजली बता नहीं सकते हैं कि कौन से इंटरप्रिटेशन ऑफ quantum mechanics सही है, and various other interpretations have been proposed as well. In fact, so many कि Paul Dirac, the great physicist Paul Dirac, you might have heard the name and you see उन्होंने Dirac notation in quantum mechanics दिया, उनके कई सारे research papers, revolutionary research papers हैं। He also proposed he also wrote the paper The Lagrangian of Quantum Mechanics, जिसके idea को ही Feynman ने और build किया, and he formed his path integral formulation. And well, you have the Dirac equation of course. तो Dirac ने इनफैक्ट इससे बात करने पे भी मना कर दिया about the various interpretations of quantum mechanics. For so many interpretations have been proposed and we don't know if any of them is true or which of them is true. Because they are only general ideas to try to make sense of the math behind quantum mechanics or the probabilistic nature. Otherwise, this is all that we can tell about the wave mechanics maybe. So यहाँ पे आपको पता चलता है there is also this interpretation called shut up and calculate, and trust me that is the name of interpretation itself. तो यहाँ पे this is how the wave mechanics works. You have to solve the Schrodinger equation कि एक probability distribution curve होता है जो कि matter waves में as abstractly classify हो सकता है, but it is not exactly that. Between A and B, this is how you find. Now of course this isn't the entire wave mechanics in one video, but this is a general idea behind Schrodinger's quantum mechanics. पूरी wave mechanics एक वीडियो में कवर करना definitely possible नहीं है, but it is the general idea between how we weave things of measurements and non-measurement problems in wave mechanics. Aside than that, एक बहुत ही important principle, the uncertainty principle, Heisenberg's uncertainty principle वीडियो में छूटता है. So let me just write that equation right here for the sake of completion, for the sake of completeness, and it is this. वरना Schrodinger Heisenberg's uncertainty principle is really such an important principle जिसके ऊपर पूरी quantum mechanics भी rely करती है. It deserves a video of its own which I have already uploaded on, so you can just watch my video about the uncertainty principle and see कि how इससे ये जो मैंने explain किया ये uncertainty principle relate करता है. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.